वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। सो आज आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तैयार है। ये वीडियो लेक्चर होने वाला है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है व्हिच इज दिस। नोट डाउन द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द एस्केप वेलोसिटी at the moon whose radius is 1.7 into 10 to the power 6 meter and value of G will be 1.63 meter per second square. So this is the question. Question is find the escape velocity at the surface of moon whose radius is 1.7 into 10 to the power 6 meter and the value of G will be 1.63 meter per second square. So आपको escape velocity कैलकुलेट करना है मून के लिए। यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है मून का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज आल्सो गिवन। सो द रेडियस इज 1.7 into 10 to the power 6 meter and the value of G is 1.63 meter per second square. We have to calculate escape velocity. So what is the formula for escape velocity at moon? Escape velocity at moon है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है velocity at moon, escape velocity at moon. You can also write it as escape velocity like this. इस तरह से भी लिख सकते हो, बट जब प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वहां पे VE कैपिटल में डिनोट करेंगे तो अर्थ होगा, VP डिनोट करेंगे तो प्लैनेट होगा, VE अगर डिनोट कर रहे हैं स्मॉल में दैट विल बी escape velocity. Okay, next escape velocity का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कैपिटल G के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो कैपिटल G के टर्म्स वाला फॉर्मूला मेंशन नहीं करेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के टर्म्स में फॉर्मूला मेंशन नहीं करेंगे। वी हैव टू मेंशन द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज √2gr. सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला 2 into 1.63 into 1.7 into 10 to the power 6. Okay, what we get after solving this? Now you have 2 minutes to solve this on your own. Okay, after solving this we will get this value around 5746,000. On removing this under root sign we will get the value of around 2.3 kilometer per second. So this is the escape velocity at the surface of moon. Note down the steps. The second question. अब second question जो आपका होने वाला है it will be regarding the planet. Planet के regarding होगा. Note down the second question which is the mass of Jupiter. The mass of Jupiter will be 1.91 into 10 to the power 36 kilogram and its diameter is in this question radius is not given, diameter is given and the diameter is, what is the diameter? It is about 13.1 10 to the power 7 meter. Now we have to calculate the escape velocity. Calculate its escape velocity. We have to calculate the escape velocity on the surface of Jupiter. On the surface of
Jupiter. Okay. Note down the question. After that we will start solving it. So once again I am repeating the question. The question is, the mass of Jupiter is 1.91 into 10 to the power 36 kilogram and its diameter is 13.1 into 10 to the power 7 meter. Calculate its escape velocity on the surface of Jupiter. यहाँ पर क्वेश्चन में मास ऑफ द जुपिटर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वी कैन राइट द मास व्हिच इज इक्वल टू 1.91 10 to the power 36 kg, that is also given in this question, and the diameter is given. So diameter is 13.1 10 to the power 7 meter. So diameter को आप सबसे पहले तो रेडियस में कन्वर्ट कर दोगे. So after calculating the radius we will get 6.55 10 to the power 7 meter. Okay, so after calculating this we get this value. Now what we have to calculate? We have to calculate the escape velocity. Escape velocity. Escape velocity. The formula will be in terms of mass and radius. So in the terms of mass and radius, what is the formula? Under root 2 gm upon r. So यहाँ पर जो है आपको कैपिटल G की वैल्यू ले लेनी है, which is universal constant 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Is it visible to you? Yes. So on putting this value in this equation, in this formula, what we are going to get 6.67 10 to the power minus 11 into mass, that is 1.91 10 to the power 36 kg whole divided by 6.55 into 10 to the power 7 meter. Now calculate it. Now you have to calculate it. You will get 25.4794 into 10 to the power 25 divided by 6.55 into 10 to the power 7. Further solving it, we will get around 3.889 10 to the power 18. 3.889 10 to the power 18. On removing this under root sign, we will get around 1.974 into 10 to the power 9 per second. Meter per second. Meter per second. Now note down the next question which you have to solve on your own. Next question जो भी है वो आप उसको खुद solve करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है then you will ask. Note down the next question, question number 3rd, and the question is find the escape velocity. Find the escape velocity from the sun if its mass is 1.89 10 to the power 30 kg and its distance from the earth is 1.59 into 10 to the power
8 kilometer. Now you have to take the value of G as 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Now you have to solve this question on your own. क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे इसमें, और इसमें जो आपका डिस्टेंस है इट विल बी कंसीडर्ड एज द रेडियस. जिसमें आपका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है इट विल बी कंसीडर्ड एज द रेडियस. So you have to apply the formula that escape velocity is equal to gm upon r, 2gm upon r. Now note down the next question, question number 4, which is a quite interesting question. The radius of the planet is double of that earth. The radius of the planet is double of that earth, but their average densities are same. If the escape velocity earth be Vp and Ve respectively, then prove that, then you have to show that, what we have to show, that escape velocity of planet is 2 times the escape velocity of earth. So I am repeating the question again. Question is, the radius of the planet is double of that earth, but their average densities are same. So यहाँ पर जो आपका रेडियस है प्लैनेट का वो अर्थ का डबल है, एंड जो इसकी एवरेज डेंसिटीज है प्लैनेट की और अर्थ की वो सेम है. So if the escape velocity of planet and the earth be, अब escape velocity planet को हमने Vp से डिनोट किया है और escape velocity of earth हमने Ve से डिनोट किया है, then we have to show that Vp is equal to 2Ve. We have to show that, प्रूफ ये करना है कि escape velocity जो planet की है वो 2 times है escape velocity of earth की. Okay, according to the question, both the planets have same densities. तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू रो. बोथ द प्लैनेट्स की सेम है. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ. सबसे पहले मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, सो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो हम सबसे पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो. इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, इसलिए इसको re से डिनोट कर देंगे. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इसको Ve से डिनोट करेंगे, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी अगर कैपिटल में लिख रहे हैं Ve, इट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. अगर इसको स्मॉल में लिखेंगे Ve, इट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी की भी हो सकती है. सो एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला 2gm upon r. So this is the mass of the earth. On putting the value of m in this formula, 2g 4/3 pi re square into rho upon re. This is because this is the radius of the earth. एक re से एक सिंगल re will be cancelled out. It is r cube cancelled out, and this become 4/3 will be multiplied with 2,
and it will become 8 upon 3 g pi r square rho. So r square जो है इसको अंडर रूट के बाहर ले आते हैं, it will become r and the rest of the things remain inside g pi rho. This is the equation number first. After that बाकी के स्टेप्स को मैं इधर लिख रहा हूं, आप इसके नीचे नोट डाउन करेंगे. Now the mass of the planet that is mp, which is equal to 4 upon 3 pi rp square, because it is the radius of the planet. इसको rp से डिनोट किया है यहाँ पर. Now the escape velocity of planet, that is vp. यहाँ पे escape velocity of earth ve था, यहाँ पे escape velocity of planet vp है. फॉर्मूला वही वाला सेम, 2gm अपॉन r. m की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 2g 4 अपॉन 3 पाई rp स्क्वायर इनटू रो अपॉन rp, which is the radius of the planet. एक rp से एक rp will be cancelled out. सेम थिंग बचेगी आपके पास अगेन, 8 अपॉन 3 g पाई r स्क्वायर रो. r को आप बाहर रख लोगे and the rest of the thing remain inside g pi rho. This is equation number second. This is the escape velocity of the planet. Note down the steps. स्टेप्स को नोट डाउन कर लेंगे, बाकी की चीजें मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट रख करके. Now we have to take the ratio of escape velocity of planet to the escape velocity of the earth. Now अब escape velocity of planet आपके पास यहाँ पर है rp और यहाँ पर क्या था re. ये रह गया है ना, तो आप मेंशन कर देना, कहीं नहीं पे rp और re छूट गया है उससे, तो यहाँ पर rp हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग, तो आपका सबसे पहले escape velocity of planet है, it will be written as rp under root 8 upon 3 g pi rho whole divided by escape velocity of earth re into under root 8 upon 3 g pi rho. 8 upon 3 g pi rho, 8 upon 3 g pi rho, both are same, it will be cancelled out. We will get here escape velocity of planet to the escape velocity of earth, that is radius of the planet upon radius of the earth. Okay, now according to the question, there is a condition in the very first line of this question that the radius of the planet is double that of the earth. ये कंडीशन आपको गिवन थी, that radius of the planet is double of that earth. तो radius of the planet is double to that of earth. On putting this value, let's see what we will get. In the place of radius of the planet, we have to write 2 times radius of the earth upon radius of the earth. Radius of the earth and radius of the earth will be cancelled out. This equation will become 2 upon 1, and we can say that 2ve. This thing we have to prove it. ये हमें प्रूफ करना था, and here is the solution.